Today we are going to start with the new topic, that is active transport. Write down, it is uphill movement of materials. It is uphill movement of materials across the membrane, where the solute particles move against their chemical concentration or electrochemical gradient Next point, energy is required for this process. Is obtained from ATP, A capital T capital P, ATP. Next point, it is supported by various evidences. एविडेंसिस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ अलग नंबरिंग पा सकते हो, रोमन नंबर्स लिख सकते हो, इस तरह हम मतलब लिखते हैं थले, ठीक है। वो लंबी लंबी लाइंस ने मतलब उन्होंने तुसी लिखना है। वेरियस एविडेंसिस, नंबर 1, absorption is reduced or stopped with the decrease in oxygen content ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ absorption is reduced or stopped with the decrease in oxygen content of the surrounding environment. Second point, metabolic inhibitors, metabolic activities ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ metabolic inhibitors, ठीक है। So metabolic inhibitors like cyanides, CYANIDES, cyanides inhibit absorption Third point is active transport is also inhibited by substances similar to solutes. Active transport is also inhibited by substances similar to solutes. Fourth point, absorption of different substances is selective. Next point, cells often accumulate salts ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ।
Cells often accumulate salts and other substances. Cells often accumulate salts and other substances against their concentration gradient. Against their concentration gradient. Next point, decrease in temperature decrease absorption. जो temperature decrease कर देना absorption घट जाएगी. Decrease in temperature decrease absorption. Next point, active transport is more rapid than diffusion. Active transport is more rapid than diffusion. The rate of transport increases. Next point है 8th. The rate of transport increases with increase in solute concentration. Rate of transport increases with increase in solute concentration till a maximum is achieved. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ absorb नहीं कर लेंदा उन्नी देर तक absorption ਜਿਹੜੀ ਉਹ चलती रहती है. Till a maximum is achieved. नैक्सट पॉइंट हूँ पॉइंट्स खत्म हो गए हूँ जरनल पॉइंट्स जो लिख रहे थे वो आ जाओ पिछों ABC करके इस तरह लिख रहे हो ना जो भी तुम 1 2 पाया. मैनी एनिमल्स ऑपरेट अ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप. मैनी एनिमल्स ऑपरेट अ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप. कला भी क्वेश्चन आ जाना जे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप डिस्क्राइब करो. ठीक है. एट देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फुल स्टॉप. At potassium exchange pump at their plasma membrane full stop. A similar proton pump, next point, a similar proton pump operates in क्लोरोप्लास्ट कॉमा जो सैल विच हुंदा है ना कहने का मतलब ये है कि कुछ मेरे को प्रेस हो गया है कुछ बंद नहीं है. जिस तरह सैल मैंब्रेन दे विच या प्लाज्मा मैंब्रेन विच ये चल रहा है उसी तरह उहदे अंदर ऑर्गेनेलिज है उन्हां विच भी इसी तरह सेम प्रोसैस चल रहा है. सो लिखो a similar proton pump operates in chloroplasts comma mitochondria and bacteria full stop. Potassium and sodium या sodium and potassium exchange pump operates with the help of enzyme enzyme का नाम किस लिखना है ATP लिखो पहला with the enzyme नहीं बेटा enzyme word भी लिखना है enzyme ATP hyphen ASE hyphen this is not a hyphen this is a slash minus the sign जिस तरह होता है ACE ACE इन्हों किस तरह बोलना है ATPase. ठीक है. एंजाइम का नाम है ATPase. ठीक है. which also functions as
carrier molecule which also functions as carrier molecule, full stop। ਹੁਣ ਇਸ एंजाइम ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਸ एंजाइम ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ATP ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਟ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦ एंजाइम hydrolyzes ATP, the enzyme hydrolyzes ATP to release energy, कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ एनर्जी रिलीज होवे। This energy is used in bringing about conformational changes in the carrier। कैरियर कौन सीगा? ATPase एंजाइम, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ कन्फर्मेशन चेंज कर दिंदा है, ठीक है। bringing about conformational changes in the carrier। next point, three sodium ions are pumped outwardly। three sodium ions are pumped, बाहर धक्के जांदे ने, outwardly, and two potassium ions, K पॉजिटिव पा लिया करो या Na पॉजिटिव पा लिया करो, ठीक है। सोडियम लिए Na पॉजिटिव और पोटेशियम लिए K पॉजिटिव। ions are pumped inwardly, वो अंदर वाल नूं आंदे ने, full stop। this exchange, next point लिखो, this exchange of sodium and potassium performs the following function। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਮਨ ਨੰਬਰ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 करके। maintains a positive potential, maintain a positive potential on the outer side of the membrane, maintain a positive potential on the outer side of the membrane। the pump creates a resting potential in the nerve cells। the pump creates a resting potential in the nerve cells, full stop। the pump maintains water balance of living cells। the pump maintains a water balance of the living cells, maintains a water balance in the living cells। it helps in the urine formation। next point सी है, अच्छा ठीक है। it helps in the urine formation। it takes part in excretion of salt in marine animals। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਮਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ it helps in the it take part in the excretion of salt in the marine animals, full stop। full stop। next heading पाओ, functions of the active transport, या benefits भी लिख सकते हो, benefits of the active transport या functions of the active transport। it helps in the absorption of points, उसी तरह रोमन च लिख लेना,
it helps in the absorption of most nutrients from the intestine. Most है, most मतलब ज़्यादातर nutrients absorption वाली intestine चले जाते हैं. Absorption of the most nutrients from the intestine. Next point, reabsorption of useful material. Reabsorption of useful material from the uriniferous tubules. जिथे यूरिन बनना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ अच्छा मॉलिक्यूल चला जाता तो दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. दोबारा सुन लो, reabsorption of useful material from the uriniferous uriniferous tubules tubules. Next point, rapid and selective absorption of nutrients. Rapid and selective absorption of nutrients by the cells. Maintaining a membrane potential. Maintaining a membrane potential. Next, maintaining water and ionic balance. Maintaining water and ionic balance between cells and extracellular fluid. Between cells and extracellular fluid. Full stop. बस that's enough for today. कल ਅਸੀਂ एक्टिव ਤੇ पैसिव ਦਾ डिफरेंस ਕਰਾਂਗੇ. ठीक है, डन. ओके बेटा, थैंक यू.